Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And today we will understand about the fractions. Yes, we will proceed towards the next topic. And the next topic is how to write a fraction, how to read a fraction. ठीक है, लिखना और बोलना हम लोग आज सीखेंगे. ठीक है. So as you can see, today's topic is writing a fraction. Okay. Today we will understand how to write a fraction. ठीक है, fraction हम लोग कैसे लिखेंगे. So the question is write the fraction for colored and non-colored part. What we have to write? We have to write a fraction. हमको क्या करना है? fraction लिखना है. किसका? colored part का और non-colored part का for the figure. So as you can see, I have drawn here figure. So first of all मैं कुछ पार्ट को कलर कर देता हूँ. That means I am here using the sketch pen, that is my marker. तो मैं इसको sketch कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा. So here I am shading the part. This is the first part. This is the second part, and this is the third part. Okay. Now as you can see in this figure, that means it is a complete object. And the complete object is divided into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 parts में divided है. Okay. Out of the 10 parts, I colored. That means I shaded 3 parts. उसमें से 3 parts को मैंने color कर दिया है. ठीक है. Suppose that is colored part. Okay. तो अब क्या करना है? हम लोगों को fraction लिखना है for the colored part and for the non-colored part. ठीक है, लिखना है. Okay, it's okay. So but first of all we have to understand something more about the fraction. Fraction से related कुछ चीजें हैं जो हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So the fraction is consist of, open the page number 157. ठीक है. On the 157 such type of question is there. ऐसा question वहाँ पर है. ठीक है. So now first of all we have to understand the fraction. ठीक है. I am writing here 1/2. Listen everyone, it is not answer of this question. इसका आंसर नहीं है, बट हमको थोड़ा सा कुछ समझना है. We have to understand something about the fraction. The number which is upper side. Listen everyone here. It is 1/2. क्या कैसे रीड करते हैं इसको? We will read it as 1/2 या फिर 1/2. कैसे रीड करेंगे? 1/2 या फिर इसको बोलते हैं 1/2. ठीक है, ऐसे इसको रीड करते हैं. ठीक है. So it is a 1/2. So this fraction, that means a 1/2 is consist of 2 parts. इसमें कितने parts है? 2 part है. कितने parts है? 2 parts are there. Okay. So the number which is upper side, एक नंबर जो है वो ऊपर है and the second number is at the bottom. नीचे में एक दूसरा नंबर है. ठीक है. So the number which is at the upper side is called as numerator. क्या बोलते हैं? Okay. Just wait a minute. Okay. Now that is called as numerator. The number which is at upper side, जो नंबर ऊपर की साइड में है, that is called as numerator. क्या बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को? Numerator. Speak with me. Numerator. Okay. So 1 is your numerator and the number which is at downside, that means which is at the bottom side, is called as denominator. क्या है? Denominator. Okay. Number which is upper side, that is called as numerator and the number which is downside, that is called as denominator. समझा मैंने क्या बोला? जो नंबर नीचे होता है उसको बोलते हैं denominator. Denominator क्या बोलते हैं? Denominator. And the number which is at upper side is called as numerator. ठीक है, numerator और denominator. That means fraction is consist of 2 parts and the 2 parts are numerator and the denominator. ठीक है, एक जो है वो numerator है and the denominator और दूसरा जो है that is called as denominator. Okay, so now listen carefully. Now I am going to write the fraction for colored part. So let's see. लिखो मत. Now fraction for colored part. अब colored part का fraction लिखना है. ठीक है. What is a fraction? ध्यान से समझ लो. ठीक है. What is a fraction? Fraction
Fraction is a equal part of whole. We have learned about that. What is a fraction? Fraction is equal part of whole, or we can say that the fractions represent a small part of whole. जो पूरा का पूरा whole है उसमें से छोटा सा part that is, if we are studying about that is called as fraction. ठीक है, वो होता है fraction. So here we have to write the fraction for the colored part. Colored part का fraction लिखना है. So how can we write? We have to write the fraction लिखना है. तो क्या करेंगे भैया, पहले लाइन खींच दो, है ना. Now we have to write something upper side and something at the down side. That means what? We have to write here one number और दूसरा नंबर नीचे लिखेंगे. ऐसा ही फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. वी हैव टू राइट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट न्यूमरेटर में क्या लिखे और डिनोमिनेटर में क्या लिखे, है ना. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द डिनोमिनेटर टेल्स अस. हाँ, वेरी गुड. ओके, द डिनोमिनेटर टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है. द डिनोमिनेटर टेल्स अस, डिनोमिनेटर हमको क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है, उसको साइड में कहीं तो भी लिख लो. द डिनोमिनेटर टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ओके, एंड द न्यूमरेटर टेल्स अस, एंड द न्यूमरेटर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स दैट वी आर कंसिडरिंग. नंबर ऑफ पार्ट दैट वी आर कंसिडरिंग. ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? कलर्ड, अरे तो हाँ, कलर्ड पार्ट. ध्यान से, मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर में रहेगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो दिस सिंगल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 equal parts. Yes, that is divided into 10 equal parts. So we will write 10 at the downside. That means in the denominator. So denominator is 10. Denominator is 10. So we will write denominator as 10 because 10 is a total number of parts in this object. This object is divided into 10 equal parts. That's why it is 10. लेकिन ऊपर में क्या लिखेंगे? कलर वाला. We have to write the fraction for colored part. So we will write the number of colored part upper side. कलर वाले पार्ट को लिखेंगे ऊपर. तो 10 में से कितने हैं? 1, 2 and 3. So there are 3 colored part. So that is 3 by 10. 3 by 10 is the fraction for the colored part. Colored part का fraction बन गया 3 by 10. बहुत सिंपल है. नीचे में लिखना टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और ऊपर में कलर्ड पार्ट, जितने भी कलर्ड पार्ट है. सिमिलरली व्हाट वी विल डू? वी विल राइट द फ्रैक्शन फॉर uncolored. Uncolored part means what? Uncolored का मतलब होता है जिसको कलर नहीं किए, उसका फ्रैक्शन बनाना है. So how can we write? Listen carefully. Always remember that denominator tells us total number of parts. इसको कहीं भी साइड में लिख लो. ठीक है, the denominator tells us what the denominator is telling to us. What is the total number of parts? कितने total number of parts कितने, वो हमेशा नीचे ही रहेगा. ठीक है, so we will write 10 here because here also total number of parts are 10. 10 ही तो है भैया, है ना. तो हम यहाँ लिखेंगे 10 is the total parts and uncolored part जिसको कलर नहीं किए वो रहेगा ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में. So how many number of parts are not colored? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there is a 7 parts which is not colored. उसमें मैंने कलर नहीं किया. So I will write here 7. So that is 7 by 10. Listen everyone, it is very simple. Out of the 10, 7 are uncolored. Okay, and out of the 10, 3 are colored. Got it everyone? Okay, 7 को जो है 10 में से 7. हाँ, वेरी गुड. लेट अस सपोज दैट यू आर गिविंग अ टेस्ट. आपने एक टेस्ट दिया, उसमें आपको 7 मार्क्स मिले. तो टीचर्स कैसे मार्क्स देते हैं आपको? ऐसे. टोटल मार्क्स हमेशा नीचे होते हैं. यस, 10 मार्क्स का टेस्ट था तो 10 वी विल राइट डाउन साइड इन द डिनोमिनेटर. एंड यू स्कोर 7 मार्क्स. सो आई विल राइट 7 अपर साइड. मैं 7 को ऊपर लिखूंगा. दैट मीन्स 7 out of 10.
So the 7 out of 10 is a fraction for uncolored part and which is a colored part. So we will write 3 by 10. Understood everyone? अब मान लो यहाँ 10 के जगह 5 parts colored होते, 5 part है वो color है. So what we will do? We will write 5 by 10 for the colored part and 5 by 10 for the uncolored part, है ना, क्योंकि 10 में से 5 अगर colored है तो 5 uncolored रहेंगे, तभी तो 10 होगा. Got it everyone? How to write a fraction for color and uncolored part? I hope you understand. Okay, quickly note down in your maths notebook and always remember that number which is downside is called denominator. नीचे वाला denominator, ऊपर वाला numerator. The number which is at upper side is called numerator and downside is the denominator. Denominator tells us, this is the line, ये वाली line जो है बीच वाली, I'm taking this marker. Okay, so the number which is downside, that means the denominator. This denominator tells us the total number of parts. Total parts कितने वो हमेशा नीचे होंगे. And for the colored part and for uncolored part we can change the numerator. Numerator हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. That is a number of parts that we are considering. कलर वाला हम लोग ले रहे हैं या अनकलर वाला ले रहे हैं, that is depends upon us. ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला बोलो हाँ डिनोमिनेटर है. वेरी गुड. तो फटाफट से इसको नोटबुक में प्रिंट कर लो भैया एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 10.2. ओके, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.2 की तरफ चलेंगे. आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2. ओके, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड द फ्रैक्शंस ऑफ अ कलेक्शन व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. लिख लो. Okay dear students, so let's proceed toward the exercise 10.2 which is on page number 158. Okay, 158 यानी कि 158. Okay, so everyone open the page number 158. I will tell you some questions, उसमें से मैं कुछ आपको बताऊंगा and rest of the questions is your homework. बाकी सब आपके homework है. But before that I hope you have opened the page number 158. आपने पेज नंबर 158 ओपन कर लिया है. प्लीज सी द एग्जाम्पल विच इज अपर साइड. ये वाला जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना, इस एग्जाम्पल को देखो. एवरीवन लुक दिस प्रॉब्लम. ओके, देखो वाले प्रॉब्लम को, ये ऐसा डायग्राम है वहां पर देखो ऊपर में पेज नंबर 158 पर. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, कैन यू सी? यस, यू कैन सी. नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल? राइट द फ्रैक्शन फॉर ग्रीन पार्ट एंड येलो पार्ट फॉर द फिगर. ठीक है, इस फिगर का क्या करना है? ग्रीन पार्ट का और येलो पार्ट का फ्रैक्शन वी हैव टू राइट. यस, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट वी हैव टू राइट. वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन. ओके, एंड दिस फ्रैक्शन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. दो पार्ट्स है. फर्स्ट इज द न्यूमरेटर एंड सेकेंड वन इज द डिनोमिनेटर. सो द नंबर विच इज एट अपर साइड, जो नंबर ऊपर है वो नंबर क्या रहेगा? न्यूमरेटर. and the number which is downside it is called as denominator. ठीक है. So first of all what we have to do? We have to count the total number of parts in this figure. So इस फिगर में total number of parts कितने हैं? 1 2 3 4. ओके, लेफ्ट साइड में 4 है तो राइट साइड में भी 4 होंगे. ओके, मैं अपना राइट लाइन लेफ्ट बोल रहा हूँ. ठीक है. सो हियर वी नो दैट देयर आर 8 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. इस पूरे के पूरे फिगर में कितने टोटल पार्ट्स है? 8. ठीक है, दैट्स वाई द डिनोमिनेटर हैव द 8. दोनों में डिनोमिनेटर में 8 है. ठीक है. एंड द फ्रैक्शन फॉर ग्रीन पार्ट. अब ग्रीन पार्ट का हमको फ्रैक्शन लिखना है. वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन फॉर द ग्रीन पार्ट. दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू? वी विल राइट द फ्रैक्शन व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन पार्ट्स आर 1 2 3 4 and the 5. So there are 5 green parts. So we will write 5 in the numerator and the total number of parts of the figure. Figure के total number of parts that is 8 in the denominator. ठीक है. And similarly for the yellow part. येलो में कैसा है? येलो पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 3 by 8. 8 में से 3 पार्ट्स येलो है. गॉट इट एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स फोकस द कैमरा ऑन द बोर्ड अगेन. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द एक्सरसाइज 10.2. हम लोग एक्सरसाइज और ये मत भाई. हाँ, ओके. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द एक्सरसाइज 10.2.
okay, which is on page number 158. So now we have to color the figure. कलर करना है, ऑलवेज यूज अ वैक्स कलर, ठीक है, या फिर पेंसिल से शेड भी कर सकते हो. डोंट यूज स्केच पेन एंड वाटर कलर, ठीक है. ओके, सो नाउ वी हैव टू कलर द फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन. ओके, लिसन हियर, दिस 3 इज इन द डिनोमिनेटर. 3 जो है वो है डिनोमिनेटर में, एंड दैट्स व्हाई this figure is consists of total number of parts, that is 3. This figure have the 3 total parts, 1, 2 and 3. But out of 3 we have to color only 1. 3 में से सिर्फ एक ही कलर करना है. So we can color any one. किसी को भी कलर कर दो एक को. So I am coloring this one. Okay, so that is the colored part, which is a 1, and total number of parts is 3. So that is a figure which is showing 1 by 3. ठीक है, ये फिगर में 1 by 3 हो गया. Okay, which is the question number 3. Now I am taking the question number 4. There is 4 is in the denominator. That means there is 1, 2, 3, 4. Total number of parts is 4. But 4 में से हम लोग कलर करेंगे 3. So 1 को मैंने कलर कर दिया. Second is this. गोल गोल जलेबी बना दो. हाँ, don't do it. You have to color. है ना, मेरे पास तो कलर है नहीं. That's why I am using this method of shading. Okay, so I have shaded here 3 parts out of 4 parts. 4 में से 3. Okay, that means 4 out of 3 out of 4. We have to color 3 parts out of the 4 parts. So this is a denominator which is 4 and 3 is your numerator. Understood? Okay. So now let's proceed towards the question number B. अब question number B की तरफ चलते हैं. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ के जितने बच्चे और है वो पूरे के पूरे आप ही को करना है, ठीक है. एंड नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर बी ऑन द सेम पेज नंबर. नाउ वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन फॉर द फिगर. यहाँ पहले से कलरिंग किया हुआ है, अच्छा है, कलर किया हुआ है ना. सो हियर वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन. सो एज यू कैन सी, इट इज अ फिगर which is a second figure. Okay, this is the second number figure. The total number of parts is 4. 1, 2, 3 and 4. So we will write total number of parts downside, and out of the 4 parts, how many number of parts are colored? 3. तो 3 लिखेंगे छत के ऊपर, that means in the numerator. Okay, and now let's see the fifth question, fifth one. Okay, so this is the fifth question. This is a figure, and in this figure there are total number of parts. How many number of parts are there? Total 3. 1, 2, 3. That means 1, 2, 3. So what we will do? We will write 3 in the denominator, है ना? And out of the 3 parts, only 1 part is colored. Okay. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 by 3. Okay. This figure is showing 1 by 3. Out of the 3 parts, only 1 part is colored. Okay. Here is also total number of parts are 3. और 3 में से एक जो है वो कलर किया हुआ है. That's why we will write here 1 by 3. Got it, everyone? Okay. I am drawing here one figure, and you have to write the answer of this figure in the comment box. ठीक है? 1 लिखना, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा देना. स्लैश होता है एक लाइन, उसके नीचे नंबर लिखना है आपको. ठीक है? So tell to your parents, they will do for you. ठीक है? So that is a diagram, and this is a single object which is consist of 1, 2, 3, like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 का मैंने कलर कर दिया. ओके, नाउ राइट द फ्रैक्शन फॉर कलर पार्ट. मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन का लिखना है आपको यहाँ पर. यू हैव टू राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट. यू कैन मैसेज मी और यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. गॉट इट एवरीवन? सो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करना है. दैट इज योर होमवर्क. आज के वीडियो में बस इतना ही. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन. हैव अ गुड डे. 1 मिनट. What is this? 1/3 और 1 by 3. इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं. हाउ टू रीड अ फ्रैक्शन? 1/3. अपॉन भी बोल सकते हैं बीच में, या फिर यू कैन यूज अ वर्ड बाय. 1/3.
द नंबर विच इज डाउन साइड इट इज योर डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर. ओके ओके, ठीक है, बाय बाय. प्लीज नोट द, प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज 10.2 completely. Okay, have a good day.